Hi guys, a very good morning to all of you and welcome to the class. I hope you guys are doing extremely well. So in this new series, we will be discussing about the rapid fire MCQs on various subjects. This series हम लोगों ने नया start करा है, wherein every day from 9 o'clock in the morning till 9:15, Monday to Friday, we will be discussing rapid fire MCQs. और जितने भी हमारे MCQs होंगे अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड होंगे. So each day we will be picking up a new topic. Like for today we have modern history. Tomorrow we will be discussing geography, then art and culture. One of the days we will be discussing Indian economy, Indian polity and current affairs as well. So all of these will be a part of the classes. We will have roughly 10 questions per day which we will be discussing from various topics. And उनके साथ साथ मैं आपके साथ answers भी discuss करूँगी of the questions that we will be discussing. So on that note, let's begin with the class. Before I begin, you can obviously find me on Unacademy and you can register and be a part of the Unacademy application as well. So download the Unacademy application on your phones and ऊपर आप category में जाके UPSC CSE GS search कर सकते हैं, log in कर सकते हैं and उसके बाद you can get a subscription for 1 year, 2 year depending on the year you're preparing for the examination. Apart from that, we have India's best educators for various subjects from which you can go across with various subjects. We also, when discussing about myself, I am myself a subject matter expert in Indian polity, ethics and society, and I am a published writer. You can use my code SHIVGLIVE for enrollment in any of the courses that you are seeking. The link to the Telegram channel and the community on the Unacademy application has been shared with you. You can follow us on Telegram, join us on community. And apart from that, Unacademy has started with the UPSC CSE test series for 2022 aspirants, जहाँ पे हम लोग मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस को लेकर आए हैं और इसी के साथ साथ ऑप्शनल टेस्ट सीरीज को भी लेकर आए हैं. आप कोड यूज कर सकते हैं SHIVGLIVE and using this code you can get a discount of 10% on the various courses that we have. Okay. So on that note, let's start with the class. 10 questions today we will be discussing related to modern history today. Tomorrow we will be discussing Indian polity and every week we will be having a new topic at hand. Okay. Now when we are discussing about the Tana Bhagat movement, so the three statements which have been given is Tana Bhagat is a tribal community which has been mainly found in Maharashtra. They opposed Gandhiji's ideologies of non-violent resistance and the movement was anti-zamindari movement. Out of the given three, you have to tell which is the correct option. Now, a lot of time it happens कि अगर ऐसा कोई भी question आता है and recurringly a thought runs in your mind is कि यार हमने ये कहीं पढ़ा है but we are somehow unable to answer it. So the easiest trick of the town would be जहाँ पे भी आप अपने स्पेक्ट्रम से अनअकैडमी के नोट्स से या NCERT से आप कहीं से भी अपने जिस भी सोर्स से आप इन मूवमेंट्स को पढ़ते हो, all of these movements have been given either under the revivalist movement or the reformist movement. So you can make a note of it that movements before 1857 we had, so there were two categories of movements. We had movements before the year 1857 and then we had movements after 1857. And amongst both these movements make a category that which were specifically anti-zamindari movements. Amongst these you could have the reformist ones and amongst these you could have the revivalist ones. ठीक है, so movement before 1857 में revivalist भी आए थे और आपके पास reformist भी आए थे. On the other hand, after 1857 आप एंटी गवर्नमेंट जो हमारे मूवमेंट्स आए हैं, रिप्रेजेंटेशंस आए हैं, कोई पर्टिकुलर एंटी कास्ट मूवमेंट्स आए हैं, आप उस पर्टिकुलर पार्ट में लिखकर आ सकते हो. तो विद रिस्पेक्ट टू द ताना भगत मूवमेंट द करेक्ट ऑप्शन इज बी. पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज दे डिड नॉट बिलोंग टू महाराष्ट्र बट दे वर ए कम्युनिटी विच वॉज फाउंड इन झारखंड, जहाँ पे इनका मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1912 में. और ये जो जात्रा था ताना भगत का, ये नवदातोली विलेज इन झारखंड में आया. They became followers of Mahatma Gandhi over a period of time and they started believing in ahimsa. The third statement is that एक anti-zamindari movement है, that is the correct one. Okay. Now as we move ahead to the second question, with respect to the Charter Act of 1813, you have been given two statements and you have to tell the correct one again. So again, a lot of time it happened कि बहुत सारे acts क्योंकि आपको पढ़ने पड़ते हैं with respect to polity, with respect to modern history. Question seeps in कि भाई इतना याद कैसे रहेगा? Easiest trick of the town for this would be कि you can make a list of all the acts which came in the two categories. One we can have the company rule, ठीक है, और उसके बाद एक हम लेकर आ सकते हैं crown rule. So you can make your notes in these two categories. So you can make your notes in these two categories as company rule and crown rule, and in what form can you work on both of them. So let's say whenever we are discussing about company rule, start from the Regulating Act of 1772. That is something which you can do. Second thing I think that you can do would be wherein you can move around and move to the crown rule.
and as a result of that it would be giving you a clearer idea as to what other movements came after 1857. So this is 1858 till 1947 that we have the movements. This is from 1770 to 1773 till 1857 we had all the acts. Then amongst these acts, the first one would be your Regulating Act, then comes the Fifth India Act, and so forth. And then there were 4 Charter Acts. We had in 1813, 1833, 1853, I mean 3 Charter Acts. We could not come to the 1873 one because the 57 revolt happened. And you can make a tabular information, you can do a comparison of the 3 acts so that it makes it easier for you to remember. So with respect to this particular question, A statement is correct that many of the provisions of Charter Act of 1813, they were guided for making a social base in India. ये करेक्ट स्टेटमेंट है. सोशल बेस क्यों लेकर आना चाहते थे हम, ताकि एजुकेशन को फंड कर पाए, मिशनरीज की एंट्री हो पाए, जहाँ पे हम लोग चाहते थे कि क्योंकि हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि बहुत खर्चा हो रहा है ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स को मेंटेन करने में, इट इज़ बेटर कि अगर हम कुछ ना कुछ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे लेकर आ जाए, वो कंपेरेटिवली सस्ता पड़ेगा. चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने मोनोपोली एंड करी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की इन द ट्रेड एक्सेप्ट फॉर टी एंड ओपीएम. तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोविजन ओपीएम के लिए नहीं था, टी के लिए जरूर था. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर द ट्रीटी ऑफ भैरोवाल आपको बताना है कि रानी जिंदाल को आउट ऑफ द गिवन 4 प्लेसेस कहाँ पे भेजा गया था एज अ पेंशनर. Now this is the absolute factual question. So a lot of times this question might not be asked in your UPSC exam, but state PCS में ऐसे facts जरूर पूछे जा सकते हैं. So that you come to the mode of it, थोड़ा सा practice हो जाए, उस particular part में ये आपकी मदद कर सकता है. तो ट्रीटी ऑफ भैरोवाल जो कि 1846 में साइन हुई थी, रानी जिंदल को बनारस भेजा गया था ऑन एन एनुअल पेंशन ऑफ 1.5 लाख. ठीक है, अब ये चीज याद रखने की है कि ये जो ट्रीटी ऑफ भैरोवाल साइन हुई थी, ये किस वॉर से रिलेटेड थी. Was it the Anglo-Sikh War 1? Was it the Anglo-Sikh War 2? This is something which you need to remember, and then you need to understand कि what इसके पहले भी कोई treaty अगर sign हुई थी और उसके terms क्या थे, were they being followed or not? Okay. Then comes the third question. Next question. Which amongst the following events took place during the time of Lord Curzon? Again, easiest तरीका जितने भी वाइसरॉयज और गवर्नर जनरल से उसको ऑर्डर याद करने का. स्पेक्ट्रम में पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है. जस्ट रिकॉर्ड इट लाइक एवरी वीक. आई वुड रादर से कि इसको पढ़ लो, देखो रटोगे तो भूल ही जाओगे, बट एक क्रोनोलॉजी में इसको याद करने के लिए हर संडे को टेक आउट 10 मिनट्स ऑफ योर टाइम, और सारे के सारे गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉयज के अंडर जो भी मेजर इवेंट्स हुए हैं, all of them have been given in the tabular form there. Just go through them. ठीक है, so out of the given option, the correct option is C for this one. तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया था 1901 में, और उसको खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस नाम दे दिया गया था 2010 में. क्वीन विक्टोरिया की डेथ हुई थी 22 जन 1901. कोलकाता कॉर्पोरेशन लॉ पास हुआ था 1899 में. पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया गया था 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, लेकिन इसका जो रिवोकिंग हुई थी, रिवोक हुआ था लॉर्ड हार्डिंग टू के टाइम पे 1911 में. तो ये चीज याद रखना, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक रहे थे, एंड इन द 6 years ऑफ हिज रेन कौन से मेजर काम हुए. ठीक है, the next question is regarding the Mopla rebellion, that out of the given 4 which is or are correct. तो अगर हम इसमें options की बात करें, whenever we are discussing, again the same strategy which I told, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आए with respect to the rebellions, ये देखो कि वो रिबेलियन किस साल का है. थोड़ा सा याद करने के लिए ये कोशिश करो कि वो ट्राइबल रिबेलियन है, वो एंटी जमींदारी, एंटी ब्रिटिश, एंटी हिंदू, किस तरीके का स्ट्रगल है, और उस बेसिस पे किस कैटेगरी में वो फिट हो सकता है. तो मोपला रिबेलियन से करेक्ट ऑप्शन है डी. ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेम. हम कभी भी मोपला रिबेलियन की बात करें, 1921 में स्टार्ट हुआ था ये मालाबार रीजन में, जहाँ पे ये एक एंटी हिंदू मूवमेंट था, एंटी ब्रिटिश और एंटी जमींदारी मूवमेंट था, वेरन यहाँ पे जितने भी मुस्लिम जो टेनेंट्स थे, दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द हिंदू लैंडलॉर्ड्स बिकॉज दे वांटेड देयर मोनोपोली फॉर द सेम. ओके, यहाँ तक कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, एनी पार्ट सो फार दैट वी हैव व्हिच इज अनक्लियर, प्लीज लेट मी नो, आई विल हेल्प यू विद द सेम. सो एज फार एज आई कैन सी, अ मेजर पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Fantastic. Now as we move to the next question, the next question is that which of the following statements are correct about the Indian freedom struggle? तो जब भी हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं, अगेन ये क्रोनोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको ना आप इंडिया के पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोस 3 पार्ट्स यू कैन गो अलोंग एंड रिपीट योर डेटा, लाइक व्हाट इज द इजीएस्ट वे. जैसे हम एक नेशनलिस्ट मूवमेंट देख सकते हैं 1858 टू 1905. ठीक है, इस साल में क्या हुआ, हमारे आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ, तो ये एक फेज हो गया. फिर हम एक सेकेंड जो मिलिटेंट फेज आया वो देख सकते हैं 1905 से 1919 का फेज देख सकते हैं.
थर्ड फेज हम एक देख सकते हैं कि 1919 से लेके 1939 तक क्या हुआ ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड दी पार्ट जहाँ पे देयर वाज महात्मा गांधी, देयर वर ऑल द रेवोल्यूशनरीज दैट वी नो ऑफ। और फोर्थ फेज आ जाएगा हमारा 1937 से लेके 1947 तक, जहाँ पे हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। तो फ्रॉम द मॉडरेट फेज टू द थ्री एक्सट्रीमिस्ट फेजेस हम पूरे के पूरे स्ट्रगल को डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से 1919 से आपका 1939 का गांधी एरा आ जाता है, बिकॉज महात्मा गांधी केम टू इंडिया इन 1915 और उनकी जो स्टोरी स्टार्ट हुई थी दैट स्टार्टेड विद चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और फ्रॉम द जलियांवाला बाग इंसिडेंट ही बिकेम अ वेरी प्रोमिनेंट नेशनल फिगर। ठीक है, so now with respect to the Indian freedom struggle, the four statements which have been given, D is the correct one. नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 1920 में, जो कि अगर हम बात करें नॉन कोऑपरेशन केम में था खिलाफत मूवमेंट। तो इसको याद करने के लिए हमेशा नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट से याद कर सकते हो, which was followed after the जलियांवाला बाग। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था हमारा 1930 में स्टार्ट हुआ था। CDM अगेन स्टार्ट हुआ था जब whenever we will be discussing about the CDM part, ये चीज़ को समझना कि किस तरीके से एंटी साइमन, जब साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट खत्म हो गए थे उसके बाद दिस मूवमेंट स्टार्टेड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज टुक प्लेस इन 1937 आफ्टर द जनरल इलेक्शन, और क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था 1942 में एट द पीक ऑफ द वर्ल्ड वॉर। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। With respect to the given, आपको बताना है कि इंडियंस वर बिटरली डिसअपॉइंटेड एट द क्लोजिंग स्टेजेस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो रीजन क्या था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था, क्यों इंडियन नेशनलिस्ट इतना परेशान थे? What is the easiest way to recall this, remember this? That would be, अगर हम कभी भी बात करें, सो 1914 से लेकर 1919 तक हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहा था, और इस टाइम पे क्या क्या चेंजेस चले थे, किस तरीके से चले थे, उसको देखने के लिए बस जस्ट गो थ्रू पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री की कौन से पार्ट्स इंटरलिंक्ड है या कौन से पार्ट्स ओवरलैप करते हैं। तो अगर हम कभी भी बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट क्यों है? क्योंकि जब द वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड, इंडिया में पीस स्वॉर्ड के थ्रू आया था, और रादर इट वाज द रूलेट एक्ट व्हिच वाज पास्ड इन द ईयर 1919। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सबसे बड़ी जो गड़बड़ आई थी, हेंस इट हैपेंड whenever we see कि 2 and 4 क्यों करेक्ट हुए, क्योंकि whenever we are talking about closing of the world war was brought by peace, जहाँ पे रूलेट एक्ट पास हुआ। ठीक है, गांधी was prevented by Delhi, by the government from proceeding to Delhi। हम ये चीज समझ सकते हैं that महात्मा गांधी had not become a very important figure just by then। He was a very prominent figure, but over a period of time he was becoming important। और only few Indian princesses participated in imperial conference. There was nobody who was invited from India for the same reason। Okay। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रिवी पर्स? अगर हम प्रिवी पर्स की बात करें तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि ये एक ऐसा पर्स होता है विच इज गिवन प्राइवेटली बाय वन ऑर्गेनाइजेशन टू दिस इज द पर्स विच वाज द ग्रांट गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द erstwhile प्रिंस ऑफ इंडिया। नाउ अंडरस्टैंड इट एंड हाउ कैन यू आंसर सच क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू एलिमिनेशन। Purse privately given by one organization to another, and my bad that I pointed it correctly. Why is it wrong? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी पैसा प्राइवेटली नहीं देती। अगर दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, द एक्सचेंज टेक प्लेस ऑन अ पब्लिक लेवल। ठीक है, द पर्स गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिग्नेटरीज फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, अगेन नो। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हो, आपको वैसे भी सैलरी मिलेगी, और अगर आप डिग्नेटरी हो तो आपको गिफ्ट दिया जाएगा, बट आपको पैसा नहीं दिया जाएगा कि खर्चा करें। ठीक है, gift given by an erstwhile prince of India to the government of India, again this is also not the correct one। why so? क्योंकि prince of India government of India को गिफ्ट नहीं दे रहा है, he would give the gift to the certain viceroy or the governor general। तो ये ग्रांट होता था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी टू द erstwhile princess in the year 1947। क्यों? ताकि उनको जो हम कैटेगरी बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद, भाई कुछ भी करके आप हिंदुस्तान का पार्ट बन जाओ, नो मैटर व्हाट हैपेंस, यू कम एंड जॉइन इंडिया, यू मर्ज विद इंडिया। तो प्रिवी पर्स एक तरीके का पेमेंट था टू द रॉयल फैमिलीज ऑफ द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया, सो दैट दे मर्ज विद इंडिया एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। आउट ऑफ द गिवन 4 आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बेल ऑफ आर्म्स, फिरंगी, revolt of 1857 or mutiny, in चारों से related 4 statements have been given। amongst these you have to answer which is the incorrect one। ठीक है, सो आउट ऑफ दीज बेल ऑफ आर्म्स का स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। बेल ऑफ आर्म्स एक ऐसा स्टोर रूम होता है जहाँ पे वेपन्स को रखा जाता था, और 1857 में यहाँ पे जितने भी सिपॉइज थे उन्होंने इस बेल ऑफ आर्म्स को ही कैप्चर कर लिया था, विच मेड मोर सेंस कि भाई आर्म्स और एम्यूनिशन से अगर आपके पास आ जाएंगे तभी आप वाइट पीपल पे, तभी आप इंग्लिश पे अटैक कर पाओगे, इंग्लिश ऑफिसर्स पे रैंसैक कर पाओगे, बर्न कर पाओगे उनके बंगलोज को, उनकी प्रॉपर्टी को, और मैक्सिमम डैमेज आप तभी क्रिएट कर पाओगे। ठीक है,
Then comes the next question again, the Hindu Widows Remarriage Act कब ड्राफ्ट हुआ था, किसके टाइम पे ड्राफ्ट हुआ था. इजीएस्ट तरीका याद करने का जो मैंने बोला, जो हम लोगों का गवर्नर जनरल और वाइसरॉयज वाला लिस्ट दिया हुआ है स्पेक्ट्रम में, जस्ट गो थ्रू दैट. उसमें ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैव बीन मेंशन. सो इट वाज लॉर्ड अगर हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी जिनके टाइम पे ड्राफ्ट आया था हिंदू विडोज रिमैरेज एक्ट ऑफ 1856 का, इनैक्ट हुआ था ये 25 जुलाई को, ठीक है, जहां पे ये बोला गया था कि द विडोज इन ऑल jurisdictions of India under East India Company are legalized to have a remarriage. Okay, so guys, this was the whole set I had from my end for this particular class. I hope it was clear and you guys had a great session. So this is a regular class which we will be having from 9 to let's say 9:15 or 9:20 every morning. And in these 15 minutes we will be focusing upon हमारा जितना भी focus होगा अलग अलग subjects पे होगा per day. So today as I said it was modern history, कल Indian polity होगा, then अलग अलग subjects होंगे Monday to Friday on the same channel 9 o'clock. See you guys tomorrow and 10 questions को हम discuss क्या करेंगे so that it makes it easy for you to revise also, to understand कि कहाँ से कौन सा concept आया है and in what form can you revise the topics. See you guys, have a fantastic day.